Parrikar has said that the previous government has to answer the big question of who accepted a bribe in the Augusta Westland case. सबसे बड़े उसमें पैसा है कि पैसा किसने लिया है, उसका जवाब उस समय के सरकार को देना होगा, क्योंकि इटालियन हाई कोर्ट जो इक्विवेलेंट होता है उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि वहाँ के लोगों ने 125 करोड़ दिया है। कई नाम लिए मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट इंडिकेशन किया है कि ये लोगों के पास उन्होंने लिखा है कि पॉलिटिकल करप्शन वाज 15.8 मिलियन यूरो, मतलब 125 करोड़, और भी है, टोटल 125 करोड़ का ही किया है। देन सम ब्यूरोक्रेट्स को करप्शन, ऐसा उन्होंने थोड़े नाम लिए हैं और थोड़ा अमाउंट्स भी बताए हैं। तो मुझे लगता है वो इन्वेस्टिगेशन से तय हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से डील हुआ है और जिस प्रकार से वो कंपनी को मदद करने की कोशिश की है उसका जवाब देना पड़ेगा। Meanwhile, the government has issued a clarification in the matter pertaining to acquisition of Augusta Westland helicopters, stating that the undisputed central issue that stands out is corruption, especially bribery. In the statement, the government asserted that ever since the new government was given the responsibility of serving the people, it has acted with speed, drive and purpose to empower the country's masses. It added that it continues to relentlessly pursue fearless and transparent governance. The statement further said that one of the core goals of the governance has been to unearth and uproot corruption and punish the corrupt. Meanwhile, CBI has called for questioning former Air Chief SP Tyagi and former Deputy Air Chief JS Gujral in connection with the probe into the alleged corruption in the rupees 3,600 crore Augusta Westland VVIP chopper deal. According to CBI, Air Marshal retired Gujral has been asked to appear for questioning today, while Tyagi will be examined on Monday. Both have been questioned at length in 2013, but the fresh round of questioning has been necessitated after the April 7th order of an Italian court.